Now, here we talk about equilibrium. Now, what is this equilibrium? The way to see the how markets achieve equilibrium is to consider what happens with the price. It is too high or too low. That's another concern. But when the demand and supply are the same, if the demand of consumers and the supply plans of seller corresponds, then the market is deemed to be in equilibrium. Only at output Q and price P are the plans of both sellers and buyers realized. मतलब same P and Q. This is the place where the demand and supply is the same, coincide, it is at equilibrium. Do you guys get it? Ab, just think about it. You demand some stuff. Okay. There's a demand which you have for market will have a demand for a particular product or a service. Demand is something just like, okay, I need this, I demand this, that's what. But think about the supply. Supply is something which they plan all their supply chain, they plan all their production, distribution, and then it comes towards the market. So demand and supply both coming in the same manner, then you are at equilibrium. जैसे कि एक दिन का demand, let's just take 1 day's demand, okay, in a micro way. Suppose how much milk is demanded in the market? How much milk is demanded in the market? That much only milk is produced in the market. How much is it possible? Huh? Percentage times it's possible, right? Now just think about it. The demand of milk is 100. Okay, let's just take 100 as a figure here. The demand is 100 and the supply is also 100. First of all, how will you understand that the supply is now? Here it is not just one manufacturing place. There are several manufacturing places. There are several people who are demanding it. Matching that demand and supply. Okay. That is equilibrium, but that is something which everyone tend to achieve. Matlab, the market will want to come towards this. Ab how do they come towards this? Is that suppose आज जो है आज आपको पता चला कि अरे डिमांड 100 की थी लेकिन 120 आ गए मार्केट में. Okay, our supply is 120. So what will you do the next day? You'll try to little bit minimize, but the demand went up to 110. Then what we will do, you'll try to produce approximately to the average of the previous days. So what is the supply trying to do? Is trying to match with the demand. And sometimes the quality is really good, the demand goes much up. So in this, ये पूरा एक मतलब this is just a graph which keeps on happening on a regular basis. Try to come towards a match. जिस दिन जितना डिमांड है उतना पूरा सप्लाई हो गया और कुछ भी बचा हुआ नहीं है, then you have reached towards your equilibrium. अगर सपोज इसको और थोड़ा सा नैरो डाउन करके अपने छोटे से एग्जांपल में अगर हम ले ले, सपोज आप बना रहे हैं कुछ खाने की चीज, जैसे कि आप बना रहे हो बर्गर. ओके ना, बर्गर आप बना रहे हो तो फिर वो क्या हो गया, ऑन डिमांड ऑन टाइम की चीज हो गई. ठीक है, आप बर्गर तब का तब बनाओगे. बर्गर के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए और जो बन चाहिए ये आप रेडी कर रख रहे हो. सपोज यू हैव 50 buns ready and ingredients ready for 50 and you get a demand of 30 only. तो क्या हो गया, 20 स्टोरेज में चला गया. ओके, so what will you do next day? You will try getting 40 buns and 40 ingredients, all that stuff. अब डिमांड कल की क्वालिटी अच्छी थी इसलिए डिमांड जो है 50 लोग के आ गए, 10 लोग बिना खाए चले गए. They were you said sorry, I don't have it.
तो यहाँ क्या हो गया, अब नेक्स्ट डे क्या करेंगे आप, अप्रोक्सीमेटली 35 रखने की कोशिश करेंगे। फिर क्या होगा, लास्ट टाइम के जो लोग आए थे बोले थे अरे वहां पे मिला ही नहीं था, आज पहले चले जाएंगे या ऐसा कुछ। तो 35 के 35 बिक भी गए, और एक्स्ट्रा और 5-6 लोग बगर खाए चले गए, बिकॉज इट वॉज नॉट सो। वॉट वर यू डूइंग, फर्स्ट डे यू गॉट अ लॉस ऑफ 20। नाउ टू कवर दैट पर्टिकुलर लॉस ऑफ 20, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मतलब अपना सप्लाई को ही कम कर रहे थे आप। फिर डिमांड बढ़ जा रहा था सप्लाई कम करने पे, फिर सप्लाई आप थोड़ा इक्वल पे लाना चाह रहे ताकि आपकी डिमांड को मीट कर सके। दिस इज व्हाट कीप्स ऑन गोइंग। एंड one day, suppose one day he made 50, okay, he got the ingredients of 50 and all 50 are sold, exact 50 are sold. There was no person who came in extra also, who you would say that arey khatam ho gaya, sorry, you did not say something like this. Exact, that is called equilibrium. समझ आया? तो ये एक छोट बहुत बहुत माइन्यूट एग्जांपल है ये, but the concept which is talked here, supply and demand, this is of at large market at large. Understanding the demand and supplying it to the demand is trying to achieve towards the equilibrium. अगर वही आप देखो नीचे, there is only one equilibrium position in the market. At this point, there is no tendency for change in the market because the plans of both buyers and sellers are satisfied at prices and outputs other than the equilibrium. Either demand and supply aspirations could be fulfilled, but not both. अगर suppose कुछ ऐसा equilibrium की दूसरी जगह जा रहा है तो, in fact, all this supply side sellers and the buyers, actually the supply side, they actually want to come towards equilibrium, क्योंकि उनको भी वेस्टेज नहीं चाहिए ना। now we are taking an example of a perishable good, इसलिए हम वेस्टेज की बात कर रहे हैं। but in more instances also you would find, like suppose there is roasted coffee, suppose, okay, roasted coffee जो मतलब पैकेट में मिलता है, which you have to crush it and then make coffee, उसकी भी जो है एक्सपायरी डेट रहती है 1 साल 1.5 साल की। या फिर वही आप एक माउस को ले लो या कंप्यूटर लैपटॉप, इसका भी ऑलमोस्ट लाइफ ऑफ दैट एसेट विल कम डाउन। जस्ट थिंक अबाउट कि आप जो है कभी कोई जमाने में खरीदा गया था iPhone 6 या 7 खरीदा गया था एक जमाने में, आज आप उसको निकालो, अरे ये एक संदूक में रखा हुआ था, खजाने में निकल के आया अभी, बॉक्स पीस, आप उसको खोले, तो क्या है फिर लाइफ रहेगी उसकी? यार सो मेनी सॉफ्टवेयर अपडेट्स व्हिच हैव हैपेंड, खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एप्पल बोलेगा वापस दे दो। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट, थिंक अबाउट दिस वेस्टेजेस, थिंक अबाउट ऑल दो स्टफ व्हिच इज देयर। डिमांड जो है तब का तभी रहती मार्केट में, उसके बाद फिर चेंज हो जाती। Okay, so we have a short test understanding. I want you guys to answer this. When the price of a good is held above the equilibrium price, the result will be पूरा दिन पक्का increase in demand. Surplus of the good मतलब एक्सेस रह गया गुड का, प्रोडक्ट एक्सेस रह गया।
Answer. When the price of a good is held above equilibrium price. अगर अपन प्राइस ज्यादा रखे तो क्या होता? डिमांड क्या हो जाता? गिर जाता। डिमांड जब गिर गया तो आपके पास क्या हो जाता? ज्यादा बच जाता। And that is called exactly surplus of, that's it, surplus of the good. What do you guys think the answer is? C? It will be C then. Okay, moving forward. Shifts in supply or other demand. Now, I want you to read it. Anas, or maybe just one minute. Who's here on this? Rimsha, please read this from here till here. Shift in supply and or demand, as well as signaling information in a market. Price acts as a stimulant. The price information may provide incentives for buyers and sellers. For instance, price rise may encourage firms to shift resources into one industry in order to obtain a better reward for their use. For example, suppose the equilibrium is distributed when the conditions of demand change. Consumers' tastes have moved positively in favor of the good, and new curve the one shows customer intentions. Supply is initially Q at the equilibrium and it is momentarily fixed, so the market price is bid up to P1. However, the producers will respond to this stimulus by expanding the quantity supplied, perhaps by running down their stocks. The expansion in supply to Q2 reduces some of the shortage, bringing price down to P2, a new equilibrium position which is above the old equilibrium P. Note that if we had drawn the diagram with steeper supply and demand curves, then the price fluctuations would have been greater. Thus, more inelastic supply tends to give rise to greater price volatility in price market over the longer term. Okay, now, what do you understand from this? Supply is initially Q at the equilibrium and it is fixed for that particular moment. So the market price is P1. That's it. Now, however, producers, okay, so the suppliers will respond to the stimulus by expanding quantity supplied. So they are going to supply more. Now, when they are going to supply more, they come down towards another price P2, which is above the old equilibrium, and they've come towards a new equilibrium price. So, Baral, baat itni hai. You don't have to go all towards these technicalities, but look into it with a more human view. Okay, a human understanding view that price अगर बढ़ रही है तो क्या होगी टेंडेंसी? एज अ सप्लायर, सॉरी, एज अ बायर प्राइस बढ़ रही है तो नहीं लेंगे, इसकी प्राइस बढ़ गई. ह्यूमन साइकोलॉजी. नाउ सप्लायर थिंग, because of that price increase he is not able to purchase, and as a supplier you are not increasing the price. Okay, the price is the cost of labor has gone high, the cost of the material has gone high, cost of so and so things have gone high. That's the reason I am not able to give it at that price. That is the reason. But let me just put more on the quality side or something like this so that the customer is getting it, or try to reach out towards the price points of the customer. They cannot always do it, but they will try to do it. Dekho, see, if you want to sell something, you can sell it for free. Okay, suppose this mouse is there, I'll sell it to you for free, but I'll only have to incur the cost, right? There's someone who is buying it, so basically nothing comes for free. It's just that you're not bearing the cost, I'm bearing the cost, someone else is bearing that cost. Okay,
दैट इज टू बी अंडरस्टूड। और वो कॉस्ट बेयर करने के लिए कोशिश करता कि सप्लायर अपने तरफ से करो ताकि डिमांड आए। और अंडरस्टैंड दिस इज नॉट जस्ट one point of time, one way of thinking. It's like, thinking from the whole market point of view. Okay, moving forward. In the longer term, effects of these changes in the market upon the reactions of consumer producers, the consumers may adjust their preferences and producers may reconsider their production plans. The impact of later on supply depends on length of the production period. Generally, the longer production period, the more inelastic the supply is and more unstable price will tend to be. अब जैसे कि कोई एक चीज है, जैसे कि आई जस्ट फाउंड आउट दैट नॉट जस्ट फाउंड आउट, आप लोग पिए लीची जूस पिए जो पैकेट्स में आ रहा है छोटे छोटे 10-10 रुपए के बॉक्स में, मतलब यस पिए ना, उसका सप्लाई चेन कम हो गया है अभी, पता है कहाँ मिल रहा है आपको पता है कि सर के पास ना। आई वाज जस्ट टॉकिंग कि मुझे वो पैकेट्स में चाहिए बड़े बड़े केस के तरह, तो वो बोल रहा है कि अरे इज नॉट कमिंग, थोड़ा कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? इट इज अंडरस्टूड, इट इज समर, पीपल आर वांटिंग इट, द डिमांड हैज गॉन अप, सप्लाई इज नॉट एबल टू मैच इट। नाउ द सप्लायर विल अंडरस्टैंड, oh it, in this area also people are knowing this, recognizing this product, so what we'll do, we'll match towards the supply. So basically ये चलते ही रहता है, ये मतलब demand and supply, they try to match each other. Okay, so let's move towards minimum and maximum prices. मिनिमम और मैक्सिमम प्राइसेस को फ्लोर एंड सीलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोर, सीलिंग। सपोज दिस इज द रूफ, इट इज कॉल्ड फ्लोर। हाँ, सीलिंग ऊपर को बोलते हैं। चलो अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप थोड़ा एक्टिव है। द फ्लोर इज, so the floor is something which is down and the ceiling is something which is above. So what does the government say, or it is understood in the market that this ceiling, okay, this ceiling is the maximum price which you can charge, and this floor is the minimum price which you can charge. Okay, there's a maximum price, there's a minimum price, and something in between is something which you should be charging your consumers. Maximum price, minimum price, and then in between any price you can charge, but there will be a maximum price and a minimum price. Now why there should be a minimum price? कि इसके नीचे नहीं बेचना कोई भी, इसके नीचे बेचेंगे तो मार्केट खराब होगी, ठीक है, और इसके ऊपर भी नहीं बेचना है। Okay, I hope you guys are getting it. That's a minimum and maximum price. All stuff is the same only. Maximum price ताकि people can afford it, inflation नहीं हो, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर सब उसके ऊपर जा भी रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ऑल कंप्लीट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज हो रहा है, खुद से तो कोई नहीं बढ़ाता है। एंड ऑल्सो रिमेंबर द प्राइस इज एन इंडिपेंडेंट फैक्टर. The government of country F has decided to impose a minimum wage for all workers, which is above the current average market labor rate. Which of the following is potential consequence of this? हर लेबर को मिनिमम तनख्वाह मिलेगी ही मिलेगी, हुकूमत दावा कर रही है, तो क्या परेशानी होगी इस बेस पे, बताइए। राइजिंग एम्प्लॉयमेंट, फॉलिंग कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन कंट्री एफ। नहीं, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम नहीं होगा क्योंकि there is a minimum rate, right, which a labor is going to be paid, so he'll be happy.
lower selling. अच्छा, do you know that in US minimum labor wage rate is $7.25 per hour. मिनिमम वेज है ये, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेबर लॉ. तो लेट अस जस्ट सी, मिनिमम तो हर बार मिनिमम में तो काम नहीं करते ना, $8 में तो एटलीस्ट काम करते. $8 इंटू एक दिन में कितना काम करते? 10 घंटे तो काम करते हो लोग. एक दिन में $80 लेकर जाते. $80 का मतलब महीने में कितने? वही 25 से मल्टीप्लाई कर लो. $80 इंटू 25. यार छुट्टी भी तो रहेगी ना बीच में, क्या सुबह शाम काम करते? नहीं, 25 days आई एम सेइंग, दैट आई विल से. 25 days, how much it is? बोलो जल्दी. टू $80 into 25 days. $2,000. Now 2,000 is the minimum wage in US per month. अब 2,000 into 80 कर लो. US एक्सचेंज रेट है ये, मल्टीप्लाई करो ना. 16,000. 16,000. यार तुम लोग दिमाग क्यों, हाँ कैलकुलेट करो ना. 1,60,000 is the minimum wage if a person has to get there. एक महीने लेबर लेबर मिनिमम उसको इतना देना ही देना है. तो क्या करते यूएस वाले? अपन पढ़े थे देखो थोड़े चैप्टर्स पहले, आउटसोर्सिंग ऑफशोरिंग पढ़े थे ना. ऑफशोरिंग आउटसोर्सिंग, what do they do? They offshore their processes. A lot of processes is offshored to countries like India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka and stuff. So what happens? In this particular amount, they will hire 10 people. They will hire 10 people क्योंकि यहाँ के labor laws उतने strong नहीं है. Or maybe 5 people, or expert 5 people they will be able to hire at this amount per month. And that's why they are happy of not hiring people there and hiring people here. इसीलिए तो वहां पे उतने ज्यादा बेरोजगार लोग हैं यूएस में भी. Because though they are not hired there, people from outside are hired and the job is done. तो उससे क्या हो गया? There is surplus of labor created in country F. मिनिमम लेबर अगर काम कर रहा है तो 7.25 देना है. तो जस्ट थिंक अबाउट अ पर्सन हु इज गोइंग टू गो टू द ऑफिस एंड सिट एंड वर्क. उसको मिनिमम कितना देना है आपको? 30-40 पर आवर. जस्ट यू हैव टू. बट वहां के कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उतनी ही है कि द कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर देयर इज अगेन सेपरेट. आई एम जस्ट कंपेयरिंग इट दैट हाउ दैट पर्टिकुलर कंट्री इज गोइंग टू ऑपरेट नाउ. They will outsource most of their work. And this is, yeah. So the answer will be राइज. एम्प्लॉयमेंट कैसा राइज होती है उधर? वेज रेट जैसा मिनिमम हो गए तो आई डिडंट गेट इट. एक्सप्लेन करो क्या है. मार्केट में लेबर रेट है और एवरेज रेट से ज्यादा ले रहे हैं. अरे कैसा बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट? तुम जैसो एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे, ठीक है. एम्प्लॉय तो खुश रहेगा कि अरे मिनिमम तो इतना मिल रहा है ना अपने को. लेकिन एम्प्लॉयर, अरे मिनिमम इतना देना पड़ेगा क्या अपने को? तो उससे क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाता. इसलिए क्या है, महंगाई भी आगे बढ़ जाती.
Okay, the cost, major cost is labor only. All other things gets added on here and there. Then comes, okay, we are actually done with our time also, but still, the economic behavior of cost. Economic behavior of cost, if you remember, we will do this particular thing in the next class only, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको. लॉन्ग रन में कॉस्ट बढ़ता है या कम होता, ये ग्राफ जो है यहाँ का, like this particular graph is really important. Then we talk about markets. When we talk about markets, then we are done with microeconomics. फिर microeconomics में जाने का अपने को. But until here, we will start from this the economic behavior of cost tomorrow, and we will complete this chapter number 7 tomorrow itself. Yeah, tomorrow we'll be able to complete. कितने दिन लगे? 3 दिन लग जा रहे हैं ना? Fine, not a problem. So tomorrow we'll start with economic behavior of cost and complete it by then. For now, we'll end this session and we'll start with management accounting. And management accounting, we are starting with a new chapter today. Okay, I'll just send you the new link for management accounting. I'm ending this session.